हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रेन ट्यूमर्स। अच्छा, ब्रेन ट्यूमर्स काफ़ी स्टूडेंट्स को एक मुश्किल, एक डिफ़िकल्ट टू अटेंड टॉपिक लगता है एग्जाम्स के हवाले से, बट टुडे वी विल डिस्कस ऑल दैट यू नीड टू नो फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। आज की वीडियो अगर आप गौर से देखते हैं तो आप कोई ब्रेन ट्यूमर का MCQ मिस नहीं करेंगे एग्जाम में, और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व भी करवाऊंगा। ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर ब्रेन ट्यूमर्स, जो कि प्राइमरीली फोकस करेगा प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स पे, यानी वो ट्यूमर्स जो ब्रेन में ओरिजिनेट करते हैं। ओके, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि मेटास्टेटिक ब्रेन कैंसर इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ब्रेन कैंसर, यानी प्राइमरी ट्यूमर से भी ज्यादा मेटास्टेटिक ट्यूमर्स कॉमन है ब्रेन में। और कौन कौन सी जगहों से मेटास्टेसाइज करते हैं? लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, बाउल कैंसर, स्किन एंड किडनी। ऑल दीज ट्यूमर्स हैव अ टेंडेंसी टू गो टू द ब्रेन एज देयर फेवरेट मेटास्टेटिक साइट। लेकिन मेटास्टेटिक ट्यूमर्स आज हमारा टॉपिक नहीं है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रेन ट्यूमर्स। ओके, नाउ बहुत सारे तरीके से आप ब्रेन ट्यूमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बट द मोस्ट practical way of dividing brain tumors is to divide them into adult tumors and childhood tumors. Okay, and stick to the list. So for example, if we talk about the adult tumors, this is the list that you must remember: Glioblastoma Multiforme, Oligodendroglioma, Meningioma, Meningioma, Pituitary, Adenoma, Schwannoma, and the pediatric tumors are pilocytic astrocytoma, Medulloblastoma, Ependymoma, craniopharyngioma, and pinealoma. Now, इफ़ यू रिमेंबर दिस क्लासिफिकेशन, आपके एग्जाम के तमाम क्वेश्चन, चाहे आप स्टेप 1 का एग्जाम दे रहे हैं, MRCP एग्जाम दे रहे हैं, या अपने अंडरग्रेड एग्जाम दे रहे हैं, यू विल बी एबल टू क्रैक द ब्रेन ट्यूमर स्टोरी। ओके, अब हम करते ये हैं कि अभी इस वीडियो में वन बाय वन एक एक एडल्ट ट्यूमर को पिकअप करके इनकी बारे में फर्दर डिटेल्स स्टडी करते हैं। सो द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे। नाउ जनरली स्पीकिंग, जितने भी ब्रेन ट्यूमर्स हैं उनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और फिर उनके कुछ स्पेसिफिक हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हैं विच यू शुड बी एबल टू नो। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन स्टडी करेंगे, सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जैसे ही आपके सामने आते हैं और हिस्टोलॉजिकल फीचर्स जैसे, सो यू शुड बी एबल टू पिक अप कि अच्छा ये इस ट्यूमर की बात हो रही है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे का important जो characteristic features आपने याद रखने हैं, number 1, it is highly malignant. So the patient will present to the clinic usually with metastasis, sometimes and sometimes without metastasis, but एक यूजुअल प्रेजेंटिंग कंप्लेन हो सकती है कि ब्रेन ट्यूमर की मेटास्टेसिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, बिकॉज दीज ट्यूमर्स आर हाईली मैलिग्नेंट। दे ऑल्सो क्रॉस द मिड लाइन, दे एक्चुअली क्रॉस द कॉर्पस कैलोसम, सो इसीलिए they appear butterfly in shape. So what do we mean by this is, if you look at these CT scan images, look at this tumor for example. So that is the normal brain, this is the tumor, and it is trying to cross the midline. That's the midline of the brain, and it is crossing the midline. So these tumors tend to cross the midline. Okay, look at this one, that's a big one, it is also crossing the midline. So that is an important characteristic feature of GBM, glioblastoma multiforme. They tend to cross the midline. Okay, they tend to, not necessarily always, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही क्रॉस करेंगे, but they tend to, right? अच्छा, ये important features हो गए। अब histological features सुनिए। Now these tumors have a necrotic area, and वो एक बाकायदा से बाउंड्री बनती है, which is what we call the pseudo palisading tumor cells. And if you check for the protein expression, this is a protein GFAP, these tumors are positive for this. Now what do we mean by pseudo palisading tumor cells? You see, so if you look at this, you see different nests बने हुए हैं, ये nest बना हुआ है, ये nest बना हुआ है, एक surrounding boundary बनी हुई है। So there are identified necrotic areas and then there are cellular areas. So बाकायदा nest of cells बने होते हैं। This is what we call pseudo palisading tumor cells. Palisade कहते हैं कैद कर लेना या boundary बना लेना, और अगर इनको आप stain करेंगे, these will be GF. So if in an examination question you get any of these features, for example crossing the midline, you get this image and they use this word or show such image, or if they use this word GFAP positive, these are all indicative of glioblastoma multiforme. Now here is a mnemonic. I'm not a big mnemonic fan, but anyways this looks interesting. Glioblastoma multiforme को अगर आप स्टडी करें इस तरह, glioblastoma multiforme, so G for GFAP positive, P for pseudopalisading cells, and M for midline and malignant. So that kind of reminds you कि GBM के important features क्या हैं.
इस स्लाइड पे जितनी डिटेल लिखी हुई है, इट इज इनफ, मोर देन इनफ फॉर यू टू आइडेंटिफाई GBM in your exams. Okay, so focus on all these characteristics, these images, and you should be doing good in your examinations. Now, another important text about GBM: glioblastoma is the most common primary tumor in nerves. Important point, and is associated with poor prognosis. Poor prognosis because it is highly malignant, very aggressive tumor, और तेजी से expand करता है. चूंकि तेजी से expand करता है तो इसके mass effects होते हैं. उन mass effects की वजह से these patients tend to die very early on. Okay, on imaging they are solid tumors, the central necrosis in the rim that enhances with contrast. एक rim बना होता है इनके नजदीक, अभी दिखाता हूँ आगे थोड़ी देर में आपको. Disruption of the blood-brain barrier and therefore associated with the so there is edema around side the tumor area. Histologically हमने बात कर ली, pseudo-palisading boundaries बनती हैं, pleomorphic tumor cells border necrotic areas. Treatment is usually surgical with post-operative chemotherapy and or radiotherapy. DEXA is used to treat the edema. Okay, so that's all you need to know about GBM. अब इसका एक question solve करते हैं. A 55 years old male comes to the emergency room with progressive headache. Now, progressive headache is a symptom of tumor, brain tumor, and vomiting, and that has worsened over the last few days. So, progressive headache and vomiting. On physical examination, there is focal neurological deficit. Another important point that you need to remember if we are looking at a patient with brain tumor. Upon physical examination, temporal arteritis is ruled out, and CT scan image shows the following. This is the image. We'll have a look. What should be the top of your differential list of the CNS tumor? Now, so you have a patient where there is progressive headache, vomiting, and there is focal neurological deficit. This is how the patient with brain tumor usually present. Brain tumor के जो patients हैं उनकी presentation यही होती है. Headache होता है, vomiting होती है, focal neurological deficit है, यानी upper limb काम नहीं कर रहा, कोई एक part of the body is weak, that sort of thing. Okay? इन्होंने फिर CT scan किया है और ये image है. अब इस image को जरा देखिए. This image is a contrast enhancing lesion, यानी नॉर्मल एरिया डिफरेंट है और जो ये लीजन एक मास दिख रहा है इट्स डिफरेंट, और इसकी अगर आप बाउंड्री भी देखते हैं तो इट इज काइंड ऑफ ग्लोइंग, इट इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द ट्यूमर टिश्यू. अब these are the options. Now, meningioma, Glioblastoma multiforme, Meningioma, Ependymoma, cranial. Now, ये दोनों तो वैसे ही रूल आउट कर दीजिए, Ependymoma and craniopharyngioma, because both of these are I told you in the pediatric population. अब आपके पास आंसर बच गए तीन, Meningioma, GBM and Meningoblastoma. GBM मैंने अभी आपको पढ़ाया. GBM में हमने ये बात की थी कि it usually crosses the midline, जबकि यहाँ पे ये usually cross the midline नहीं कर रहा. ओके, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि Meningioma, हेमेंजियोब्लास्टोमा, इनकी अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट होती है. अभी हम पढ़ेंगे जब आगे तो आपको ये बात मजीद समझ में आएगी. मेनिंजियोमा जो ट्यूमर्स हैं वो यूजुअली बॉर्डर ऑफ द ब्रेन यानी मेनिंजेस के साथ एक्चुअली अटैच्ड होते हैं. उन्हीं से चूंकि ग्रो करते हैं तो वहां पे, अब यहाँ पे ये अटैच नहीं है. यहाँ पे देयर इज अ नॉर्मल ब्रेन सब्सटेंस और ये ट्यूमर है. इट इज नॉट अटैच विद द बाउंड्री, सो इट्स नॉट मेनिंजियोमा. और हेमेंजियोब्लास्टोमा इज number one, it's a rare tumor. It's not as common as GBM. And number two, उसकी अपीयरेंस ऐसे नहीं होती. अभी हम आगे देखेंगे उसकी क्या अपीयरेंस होती है. सो एक्चुअली अगर इस पूरे केस को आप डायसेक्ट आउट करो, सो द ओनली आंसर वी आर लेफ्ट विद इज GBM. अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है जो फिट नहीं हो रही पूरी स्टोरी में, जो हमने यहाँ डिस्कस की थी इन ट्यूमर्स में. इफ़ यू लुक हियर, जो मैं बार बार बता रहा था कि दे क्रॉस द मिड लाइन, ये जो ट्यूमर मैं अभी आपको इस क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, इट इज़ एक्चुअली नॉट क्रॉसिंग द मिड लाइन. बट दैट्स फाइन, क्योंकि हर पेशेंट में हर कैरेक्टरिस्टिक फीचर मौजूद नहीं होता. सो इट इज़ ओके कि इन दिस पेशेंट इट इज़ नॉट क्रॉसिंग द मिड लाइन. हो सकता है कुछ और दिन छोड़ दिया जाए तो इट क्रॉसेस द मिड लाइन एज वेल. ओके, सो द आंसर हेयर वुड बी ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे. राइट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्यूमर टाइप विच इज़ मेनिंजियोमा. सो सी हेयर, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि मेनिंजियोमा में जो ट्यूमर है वो बिल्कुल बाउंड्री के साथ होगा, जबकि अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो इट्स नॉट विद द बाउंड्री. सो देयरफॉर दिस वन इज नॉट मेनिंजियोमा एंड दिस वन is arising from the meninges and its meningioma. क्या characteristic feature हैं और क्या histological features हैं देखते हैं. Characteristic feature, kind of a good news, it's a benign tumor. It is superficially located and it is usually from the arachnoid matter. Usually ये dura matter से भी निकल सकता है, pia matter से भी obviously ये tumor बन सकता है, लेकिन usually it is from the arachnoid matter. Okay, histological features क्या हैं? Samama bodies is kind of very much indicative of
meningioma. These calcified bodies are also present in other pathological conditions in the body, but they are in terms of CNS tumors, Schwannoma bodies, meningioma, okay, and they have spindle cells. So if you look at the diagram here, these keratin-like eosinophilic stained pearls, characteristic of meningioma. If you see such thing, और या ये डिस्क्रिप्शन हो आपके क्वेश्चन में कि देयर आर राउंडेड eosinophilic calcified structure, you have to think about meningioma, okay? और इसके लिए इन्होंने एक निमोनिक दिया है बुक्स में जो मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ. Meningioma, men have problems with their prostate specific antigen PSA, but यहाँ पे PSA is encoding for Schwannoma bodies, spindle cells, arachnoid origin, okay? So if you want to remember, you may do so in this way. But diagram कैरेक्टरिस्टिक है meningioma की if it's on the side, और ये जो pearls आपको नजर आ रहे हैं Schwannoma bodies, very very important, okay? कुछ और important बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं. It's the second most primary tumor after GBM. Meningiomas are typically benign, that's an important thing, okay? और ये meninges में से निकलते हैं. They typically are located in the fox cerebri, superior sagittal sinus, convexity of the skull base, common location है. Histologically Schwannoma bodies, इसकी हम बात कर चुके. Concentric whorls, ये मैंने आपको यहाँ डायग्राम में दिखा दिया. These are the concentric whorls, okay? Characteristic. Investigation is with CT scan and MRI, and the treatment involve either observation, radiotherapy, or surgical resection, okay? So these are the different treatment modalities. Look at the question. A 40-year-old woman is brought to the clinic. Age is important because age से हमको ये पता लगेगा कि we are talking about adult population or pediatric population. So that's why age is important. 40 years old woman is brought to the clinic after suffering from a number of recent minor falls and episodes of confusion. Again, this is showing something wrong with the CNS, okay? Now, the patient has had mild daily headaches associated with nausea that has progressed over the past 2 years. Headaches भी हैं, nausea भी है 2 साल से. Headaches are worse at night and occasionally awaken. इतने intense headaches हो जाते हैं कि वो रात को नींद से उठ जाती हैं. An intracranial mass is discovered. यहाँ बता दिया कि there is an intracranial mass on the neuroimaging which is localized to the convexity of the left hemisphere, and a biopsy of the mass shows a whorled pattern of calcified cells. This is diagnostic of meningioma, nothing else than meningioma. Ependymoma वैसे ही आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये बच्चों में होता है. ग्लायोब्लास्टोमा की पिक्चर लग नहीं रही, कोई सीटी स्कैन दिया नहीं है, और साथ में ये लफ्ज यूज कर लिया है ना, वर्ल्ड पैटर्न ऑफ कैल्सिफाइड सेलुलर ग्रोथ, सो दैट हैज टू बी मेनिंजियोमा, ओके, डन एंड डस्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अ 56-year-old woman presents to the emergency department following an episode of a generalized tonic-clonic seizure. ये पेशेंट भी सीजर के साथ प्रेजेंट कर रहा है. समथिंग रॉन्ग विद द नर्वस सिस्टम. आफ्टर नॉर्मल baseline laboratory investigations, a CT scan with contrast was conducted and revealed a well circumcised extra-axial mass that was densely enhancing and attached to the dural layer. अब यहाँ पे ये बात इन्होंने क्लियर कर दी कि this is meningioma because it is attached to a dural layer. तो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायग्नोसिस बन गई कि it is attached to the dural layer. Which of the following is the most likely histological finding? अब ये meningioma की histological finding पूछ रहे हैं, ठीक है? और meningioma की histological finding इन सब को अगर हम पढ़ें, so nuclear palisades बनते थे GBM के अंदर. fried egg appearance मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया. perivascular pseudo-rosettes ये एक pediatric tumor की finding है. Pleomorphic tumor cells border necrotic areas, GBM. Spindle cells is spindle cells in concentric whorls, meningioma. E is the answer. So see, it's not that difficult. मैंने आपसे कहा कि जो details आपको इस वीडियो में बताई जा रही हैं, if you master them, you will be able to crack any question on CNS tumors. Next tumor in the adult category is Oligodendroglioma, and the characteristic feature is actually nothing. There is no specific characteristic feature, but let's talk about the histological feature. पहला histological feature है chicken wire capillary pattern, fried egg cell and calcified tumor. This actually chicken wire capillary pattern is also visible on the CT scan. So for example, if you look at this CT, you see ऐसा लग रहा है कि chicken embryo, fine thin walled capillaries बहुत सारी बनती हैं. So this appearance is called chicken wire capillary pattern. Histology में fried egg cell appearance इसलिए कहते हैं because if you look at the cells here, so say for example we focus on this particular cell, तो center में एक egg yolk type की चीज़ है dark color, और lateral periphery side पे there is egg white type की चीज़. तो तमाम cells ऐसी ही है ना कि यहाँ पे egg yolk है, egg white है, egg yolk है, egg white है, तो kind of fried egg cell.
फ्राइड एग सेल का वर्ड आए, थिंक ऑफ ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा. ओके, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बता रहा हूं आपको. लुक एट द क्वेश्चन हियर. A 32-year-old man is brought to the emergency department after he had a fitting attack 1 hour ago. फिट्स हुए 1 घंटा पहले. पेशेंट्स को फिट्स हो रहे हैं, पेन हो रहा है, टॉनिक क्लोनिक सीजर्स हो रहे हैं. थिंक अबाउट सीएनएस प्रॉब्लम. ओके, ही रिपोर्ट्स feeling dizzy and then losing consciousness. बेहोश भी हो रहा है. His girlfriend who was present at the time says that the patient collapse हो गया था. His body went stiff and then he had violent shaking of all the limbs. तो basically fits हो रहे हैं. There was also dropping of saliva भी हो रही है माउथ से. The patient tells the emergency doctor that this is the first time this is happening. Okay, details. He has also noticed that his right arm is a bit weak, focal neurological deficit, but thought that this might be due to the work as an electrician. The emergency department contacts the neurologist and a referral is made. MRI is done and the image is shown here and there is chicken wire capillary pattern. My goodness, इतना सारा पढ़ने के बाद एक buzzword आपको मिल गया and you must jump directly with this buzzword to कि ये oligodendroglioma है. It is arising from oligodendrocytes because this is what we just learned here. Chicken wire capillary pattern, oligodendroglioma. Okay, so now, next one is Meningoblastoma. Meningoblastoma characteristic feature. This is from the blood vessel origin. It's a rare tumor. It produces erythropoietin associated with von Hippel-Lindau syndrome. Okay, thin wall capillaries. इतना common नहीं है तो exam में इतना ज़्यादा पूछते नहीं है. But anyways, there is a question. A 72-year-old female visits your clinic. Complaining of off and on headache and nausea. She has complaints of a couple of recent episodes of passing out followed by fits as informed by to her by her maid. On physical examination there is weakness of the upper limb, focal neurological deficit. CT scan shows a mass lesion and CBC shows increased hematocrit. Increased hematocrit with neurological findings. Think about erythropoietin release from a brain tumor and that is usually Meningoblastoma. Okay, next one is pituitary adenoma. Now obviously arises from pituitary gland or it can be divided into 3 subtypes. One is called tumor arising from Lactotrophs, tumor arising from Somatotrophs and tumor which are non-functional. Non-functional means these are the tumor which basically do not secrete anything. Unlike Lactotroph, which secrete a lot of things, such as prolactinoma because of increased release of prolactin. Increased prolactin or as a result of increased prolactin, physiological downregulation, but in this case, pathological downregulation of FSH. So, increased prolactin is associated with decreased FSH. और patient की manifestations क्या होंगी? Galactorrhea because of increased prolactin, amenorrhea, gynecomastia, decreased libido. All this is classical if there is lactotrophic pituitary adenoma. और अगर सोमैटोट्रॉफिक पिट्यूटरी एडिनोमा है तो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होंगे? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग, ACTH, FSSL और इनसे एसोसिएटेड जो चीजें हैं वो ऑब्जर्व होंगी. फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज, जाइगेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली, TSH इंक्रीज, हाइपरथायरॉइड, ACTH इंक्रीज, कुशिंग. सो ऑल दीज विल बी डिपेंडेंट अपॉन कि कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है. सोमैटोट्रॉफ है तो अलग सेट ऑफ सिम्टम्स होंगे, लेक्टोट्रॉफ है तो अलग सेट ऑफ सिम्टम्स होंगे. ओके, एंड नॉन फंक्शनल दे आर यूजुअली नॉट सीक्रेटिंग एनीथिंग बट मास इफेक्ट्स की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, हेडेक हो सकता है और बाइटेम्पोरल हेमिएनोपिया बिकॉज इट compresses optic chiasm. So that is an important slide if we are talking about pituitary adenomas. Okay, Schwannoma is another important adult CNS tumor. इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट यूजुअली अराइजेज फ्रॉम द सेरिब्रोपोंटाइन एंगल एंड इट यूजुअली कंप्रेसेस क्रेनियल नर्व 5, 7 एंड 8. अब ये इंपॉर्टेंट है यार, क्रेनियल नर्व 5, 7 एंड 8 जब कंप्रेस होंगे सो देयर विल बी प्रॉब्लम्स विद फॉर एग्जांपल हेयरिंग, देयर विल बी विंकिंग बिकॉज ऑफ दीज क्रेनियल नर्व डिस्टर्बेंसेस. ओके, और यूजुअली इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद अनदर डिजीज विच इज कॉल्ड न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2. हिस्टोलॉजिकली यहाँ जो प्रोटीन डिस्टर्ब होती है दैट इज S100. आपको पहले मैंने GBM में बताया था जो प्रोटीन डिस्टर्ब हो रही थी दैट वाज GFAP और यहाँ जो प्रोटीन डिस्टर्ब हो रही है दैट इज S100 एंड देयर इज एक्चुअली अ गुड निमोनिक हियर, Schwannoma SCHW, Schwa. S is for S100, C is for cerebropontine angle, H is for hearing, cranial nerve 8, W is for winking, cranial nerve 7. Okay, important slide. Look at this question. A 55-year-old patient is referred to the ENT after presenting to his physician with an unexplained unilateral hearing loss. Unexplained है यानी वजह ढूंढ के थक गए but they are unable to find कि इस hearing loss की cause क्या है. There is also tinnitus and vertigo. He is booked for an
an urgent gadolinium enhanced MRI, it's a contrast enhanced MRI, results of which confirms the diagnosis of vestibular schwannoma. So now the diagnosis of vestibular schwannoma is confirmed. Which of the following group of cranial nerves are most likely? So the answer would be, I just told you, cranial nerve 5, 7 and 8. Okay, easy one. Now all these, if you see, are the pediatric tumors. Pilocytic astrocytoma, that's a spelling mistake here, medulloblastoma, ependymoma, craniopharyngioma and panelloma. Now exams these patients obviously will be in the pediatric age group, and they will present with a range of symptoms such as fits and whatnot, but these are the buzzwords. For example, if it's an astrocytoma, it has to be associated with GFAP production, increased expression of GFAP and the rosenthal fibers. Okay, these are characteristic histological fibers only visible in pilocytic astrocytoma. Then the other one is medulloblastoma. These patients histologically present blue-white rosettes बनाते हैं ये histology में, also called Homer-Wright rosettes. Ependymoma, perivascular pseudorosettes. Craniopharyngioma, remnants of Rathke's pouch, and pineilloma is Perinot syndrome. So all these words you have to kind of remember. Medicine में बहुत सारी चीजें आपको याद करनी होती हैं. This is one of those slides. Okay, let's look at some facts about craniopharyngioma. Most common pediatric supratentorial tumor. Supratentorially जो सबसे common pediatric tumor है, that is craniopharyngioma. Okay, it is a solid cystic tumor of sellar region, is derived from the remnants of the Rathke's pouch. That's important. और चूंकि ये common भी है तो ये एग्जाम में अक्सर पूछते भी हैं. ठीक है, histology derived from the Rathke's pouch. Investigation requires pituitary blood profile. MRI treatment is usually surgical with or without radiotherapy. Let's have a look at this question. A 7-year-old boy is brought to you by his mother, 7 years. So that's an important buzzword because यहाँ पर pediatric population की बात हो रही है. Okay, who complains that her son has been vomiting for the past few weeks, especially in the morning, and she has complained of double vision for the past week. You suspect the child may have increased intracranial pressure and you order a CT scan to rule out any intracranial mass. You did the right thing. If the underlying cause of the symptoms turn out to be a medulloblastoma, so they are assuming if it's a medulloblastoma, what histological finding would be most characteristic? I just told you with medulloblastoma what goes is blue-white, Homer-Wright rosettes. Okay, fried egg appearance, adult tumor, orphan Annie, not in any tumor of the CNS, perivascular pseudo-rosettes, no. Spindle cells in constructive wall, adult tumor. So the only option that we just discussed was small blue cells with rosetic pattern, also called the Homer-Wright rosettes. Okay, that's all. And see you all in another video very soon. अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए take care of yourself.